लास्ट थ्योरी है आपकी इंटेलिजेंस की सेक्शन की। अगर आप देखें तो नया सा कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, रीसेंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड द वर्क दैट इज गॉन इनटू इंटेलिजेंस, बट यू कैन trace the roots of emotional intelligence to earlier times. In fact, people have been directly, indirectly mentioning about it, but it never gained too much of impetus or importance earlier. In fact, when you talk about कल जो हम बात कर रहे थे आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज या फिर इवन वेशलर की अगर आपकी बेसिक डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, दैट इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेटर ऑफ the capacity of an individual to think rationally, to act purposefully, and to deal effectively with the environment. This does talk about the non-cognitive aspect of intelligence also. कि आप environment में कैसे आप effectively deal कर पाएंगे, या फिर आप basically अगर आप इसमें देखें इस definition में think rationally is only the cognitive capacity, बाकी is all behavioral component in that case. So you find traces of that non-cognitive aspect of intelligence in earlier works also. In fact, Thorndike also talks about something like that, when he had for the first time talked about social intelligence long back in 1930s. Wechsler's definition came in 40s. In 50s, when Maslow talks about building your emotional strength, that was an indirect indication towards emotional intelligence. Then Gardner in 1975, when introduced the concept of multiple intelligence, there also you find some reference to emotional intelligence. And in fact, अगर आप देखते हैं तो emotional intelligence के उसमें बहुत टाइम पहले मेरिल सैलोवे ने एक मॉडल प्रपोज किया था, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ या वो उतना उसको मतलब पब्लिकली एग्जिबिट नहीं कर पाए अपने काम को. सो इसीलिए कहीं ना कहीं जो मेजर क्रेडिट मिलता है इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को फील्ड में लाने का या इंट्रोड्यूस करने का, तो वो फॉर्मल क्रेडिट गोज टू गोल्डमैन, बिकॉज गोल्डमैन बेसिकली वाज person who used to write for New York Times, and it was Goldman who in 1995 had published an article in that is Goldman, and then a book came in that was almost a bestseller, that is Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. So basically that work is banking upon Merlin Salovey's model, but the credit goes to Goldman who actually publicized. तो इसलिए बहुत ज़रूरी आप लोगों को रिसर्चर्स को समझना कि काम करने से इक्वली इम्पॉर्टेंट है उसको करेक्ट प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना और उसको दुनिया के सामने पेश करना, नहीं तो क्रेडिट कोई और मिल जाएगा. ठीक है, इसीलिए आज की डेट में प्लेजरिज्म और इन सब चीज़ों की बात करते हैं. ये पुराना जमाना नहीं तो गोल्ड में प्लेजरिज्म में फंस जाता है. तो क्रेडिट इनको ही जाता है. नाउ इफ यू ट्राई एंड डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, I'll give you a few definitions. If you see it, Goldman, no, this is Merlin Salovey. Merlin Salovey, who has been working on this topic since 1990, in their very influential article that is Emotional Intelligence, they defined it as Salovey and Mayer का है ये definition. The subset of social intelligence that involves the ability to monitor, one's own and others' feelings and emotions, to discriminate upon them, and to use this information to guide one's thinking and actions. Another definition is by Barrett.
Emotional intelligence refers to the ability to perceive, control and evaluate emotions. Some researchers suggest that emotional intelligence can be learned and strengthened, whereas some claim that it is an inborn characteristic. What is your take? It can be strengthened. It can be learned or strengthened. But do you think it has some underlying innate aspect also? Yes. Again, like intelligence, कुछ थोड़े पैदा ही सियाने होते हैं या उनको और सियाना बना देते हैं ना, और कुछ लोग पूरी लाइफ की दौरान नहीं रहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस लो रहता है उनका, some children are more receptive. Learned Okay. or But then this is how it is. Another definition is by subset. Goldman. Goldman defines emotional intelligence as a set of skills that underlie the accurate assessment, evaluation, expression, and regulation of emotion. Assessment के बाद regulation. Assessment, evaluation, expression, and regulation of emotions. So क्या set of skills that underlie the accurate assessment, evaluation, expression, regulation of emotions. Done? Now, before I go into the two models that we have to cover, I would like to touch upon a few tools. आज तक इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली ज़्यादा अब पॉपुलर हो रहा है बिकॉज आजकल हम काफ़ी बात करते हैं पॉजिटिव वेरिएबल्स की साइकोलॉजी में और कॉग्निटिव तो है ही है आजकल जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है साइकोलॉजी में जो रूल कर रहा है और 95 में भी अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया तो एंड इट हैड ऑलमोस्ट बिकम अ बज़वर्ड स्पेशली इन द कॉर्पोरेट context in America, and it picked up a lot of importance from there. Now, emotional intelligence, अगर आप देखें आजकल हम एक और बात करते हैं that is social intelligence, especially corporate उसमें काफ़ी पॉपुलर है ये चीज़ें, वर्क बिहेवियर में काफ़ी पॉपुलर है और ये काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये प्रूव किया था कि and most of these studies were longitudinal studies. You understand longitudinal studies across years. Very popular studies which had proven that there is something beyond just a basic IQ which can be attributable to success. In fact is influencing the success. तो जैसे एक सॉवरले स्टडी थी जिसमें उन्होंने बहुत छोटी एज में बच्चों के कुछ टेस्ट किए और फिर उनको ट्रेस किया 40 years down the lane and जो बच्चे तब कम इम्पल्सिव थे या बेटर ट्रेड्स दिखा रहे थे इन चाइल्डहुड दे वर मोर सक्सेसफुल लेटर ऑन इन लाइफ सो कहीं ना कहीं अलग अलग स्टडीज से ये उभर कर आई बात कि सक्सेस के लिए सिर्फ आईक्यू नहीं एंड इनफैक्ट अभी जब हम क्रिएटिविटी भी करेंगे उसमें भी ये पढ़ेंगे कि अगर नॉर्मल अगर जैसे मेरे जैसा बंदा है अगर डॉक्टरेट किया है और एक प्रोफेशन में है सो बेसिक आईक्यू आपका 120 के करीब होगा है ना 120 प्लस लेकिन रिसर्च ये दिखाती है कि आईक्यू और क्रिएटिविटी जो है या इनफैक्ट इवन इमोशनल इंटेलिजेंस ये दोनों इकट्ठा चलते हैं मतलब जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो इसमें भी आगे जाएगा तो कर्व्स दोनों इकट्ठे चलते हैं लेकिन आफ्टर एन आईक्यू 120 द कर्व्स डिपार्ट व्हाट डज दैट मीन
दैट अगर आप एकेडमिक स्कोर्स या IQ में जीनियस लोगों को लेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव भी होंगे या इमोशनली इंटेलिजेंट भी होंगे, ठीक है. You'll find people who are too genius, they are very aloof, they are, you know, that they can't be a part of the group and things like that. They might be very good in certain aspects of life, cognitive उसमें बहुत होंगे, लेकिन वो अलग से होते हैं. तो नॉर्मल वर्क लाइफ या नॉर्मल लाइफ में आपको चाहिए जो सबके साथ चले, मिलके चले. These days even in corporate we talk about working in teams, you know, rather than personal growth. The emphasis is on the growth of the team and of the organization. So all that falls flat if you're taking people with high IQ. So somewhere you know, studies had been indicating that IQ is just not a sufficient answer to you know, actually think of what makes a person successful. And in fact एक चीज़ और है कि इसमें काम इस एरिया में इसीलिए भी कम हुआ आज तक. एक तो पहले रिसेंट एडिशन है, दूसरी चीज़ ये है कि आज तक कोई भी एक बहुत ही एम्फैटिक या बहुत ही सक्सेसफुल टूल नहीं बना है इमोशनल इंटेलिजेंस का. कुछ है, अभी आप नेट पे अगर सर्च करेंगे मिलेंगे, पर वैसा जैसे कि इंटेलिजेंस की थेरीज एस्टैब्लिश्ड हैं या आपके पास इतनी ठोस टूल्स हैं इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी, और इनमें काफ़ी काम होकर आपके पास हैं टूल्स उनको मेजर करने के लिए, कुछ भी बहुत इस्टेब्लिश्ड या क्रेडिबल टूल नहीं है. अब व्हेन यू टॉक ऑफ मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, देयर हैव बीन सर्टेन अटेम्प्ट्स दैट हैव बीन मेड, एंड द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टूल इज द स्केल बाय बारॉन, जिनका बहुत काम है इस एरिया में. It is a self-report, you know, scale which tries to measure competencies including awareness, stress tolerance, problem solving, and in fact happiness. So all those non-cognitive abilities or competencies or skills that are required to make you a better fit in your life is what Baron tries to tap on. Another tool is called MEIS, that is Multi-Factor Emotional Intelligence Scale. Now this is an ability-based test where the test taker performs certain tasks to assess their ability to perceive, to identify, and to understand and utilize emotions. Another tool is SASQ, that is Seligman's Attributional Style Questionnaire. SASQ, Seligman's Attributional Style Questionnaire. Basically, this tool measures optimism and pessimism. Another one is Emotional Competence Inventory, ECI. Competence Inventory. Now this is ECI is actually a 360-degree instrument. What is 360 degree? Evaluation. Normally हम वर्क बिहेवियर में इसकी बात करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में बात होती है. 360 डिग्री अप्रेजल होता है. नॉर्मली किसी की परफॉर्मेंस अप्रेज कौन करता है? तो बॉस ऊपर से, है ना? जो जब आप 360 डिग्री कर रहे हैं तो मतलब मेरे आप बॉस से भी पूछेंगे, मेरे जूनियर से भी पूछेंगे, सबऑर्डिनेट से भी पूछेंगे, मेरे पीयर्स से भी पूछेंगे. So from all angles you are evaluating me and then make a comprehensive report of my appraisal. So similarly, ECI is a 360-degree instrument. So all the people who know the individuals, they rate that person and his competencies on in terms of emotional intelligence. It is still, you know, not very popular ability because it is a very comprehensive attempt, और actually Seligman के काम पर ही ये based है. Another one is more commercially validated, that is called EQ map. Emotional quotient mapping or map.
Now, one of the earlier studies that had been done was by Yahaya, Y-A-H-A-Y-A, 2012, the Yahaya et al. It's called the Solomon study. Now, this was a 40-year longitudinal investigation of 450 boys who grew up in Somerville, a place in Massachusetts. Now, 2/3 of these boys were from welfare families, and 1/3 had an IQ that was below 90. And the results evinced that IQ had little relation to how well they did at work or in the rest of their lives. And what made the biggest difference was their childhood abilities, like being able to handle frustration, control emotions, and to get along with other people. Another study was done at Berkeley on graduate students who later on joined for their doctoral degree in science. 80 students, graduates from Berkeley, doing PhD in science, and they underwent a battery of personality tests, IQ tests, and interviews. And 40 years later, when they were in their 70s, they were tracked down and an estimate was made of their success based on their resumes and evaluations of experts in their fields. And results showed that social and emotional abilities were 4 times more important than IQ in determining professional success and prestige. The study also evidence means evidence, or it also showed that IQ and EQ were 2 separate constructs. Like जो मैं कह रही हूँ, Berkeley is a leading school in science, है ना? अगर PhD में आप science कर रहे हैं, तो at least 120 IQ रहा होगा सबका, 82. लेकिन कुछ उसमें ज़्यादा successful हुए later on in life, some were not so successful. So that means कि after that basic IQ that they shared, what made the difference was their respective EQs, है ना? Their social ability to persist in the face of difficulty, जो हम आजकल बात करते हैं life skills की. और मतलब हर जनरेशन अगली जनरेशन को कहती है कि हम ज़्यादा सियाने थे, वो तो है ही है. My work is in this area with youth, and when I started tracing the literature
1940s में भी जनरेशन गैप की बात हुई है, वैल्यूलेस यूथ की बात हुई है, 40s में भी बूढ़े लोग यंगस्टर्स को वैल्यूलेस मानते थे। तो ये ट्रेंड तो रहा ही है हमेशा से, लेकिन yes, one thing that I am experiencing also as a person who's into behavioral sciences and teaching young kids like you, in my last 20 years of whatever I have been dealing with students, and if I compare with what we were as students in hindsight, I feel yes, with every passing year, life skills are going for a toss. You may attribute it to stress, you may attribute it to technology, to the fast pace of life, or to the superficiality of life thanks to technology. तुम लोग को पता नहीं, शायद नहीं फील होता है क्योंकि तुम उसी एरा के हो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा तुमसे पिछले एरा के, इतना आउटडेटेड भी नहीं है, लेकिन मे बी वी आर एट दैट ट्रांजिशन जिन्होंने नॉन सो मच टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट लाइफ भी एक्सपीरियंस की है। हमसे जो बड़े हैं वो तो अलग ही एरा है ना, उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता है, लेकिन हमने क्योंकि ये भी सीखा है या देखा है, और कहीं ना कहीं हमने वो नॉन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लाइफ भी एक्सपीरियंस की है, तो कहीं ना कहीं अब एक सुपरफिशियलिटी है लाइफ की, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाला हो गया है, अंदर कोर होगा कि नहीं। सिंपल एग्जांपल है कि आपके रियल फ्रेंड्स कितने और वर्चुअल फॉलोअर्स या फ्रेंड्स कितने हैं, है ना। और मेरा ये तजुर्बा है, सिंस आई हैव अ चाइल्ड ऑफ योर एज, जिसके वहाँ ज़्यादा फ्रेंड है उसका उतना अंदर खोखलापन ज़्यादा है, एंड रिसर्च इज ऑल्सो शोइंग दैट। And my latest research, PhD student, was on smartphone addiction and internet addiction amongst early adolescents, late adolescents and young adults. और उसमें यही निकला, और that was very surprising कि आपका जो emotional और social loneliness है जिनमें ज़्यादा है, उनकी addiction actually ज़्यादा है, लेकिन girls जो हैं urban, उनकी इमोशनल लोनलीनेस कब हो रही है, जितना एडिक्शन बढ़ता है उतना इमोशनल लोनलीनेस कब हो रही है, तो कहीं ना कहीं दे आर फाइंडिंग सोलेस इन दिस फॉर्म्स। तो जिनकी कोई नहीं है वो वहाँ पे अपनी दोस्तियाँ ढूंढते हैं, या दे गेट अ वेंट आउट ऑफ देयर इमोशनल एनर्जीज देयर। सो कहीं ना कहीं ये एक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जनरेशन सक्सेसफुल नहीं होगी, पर और तुमने घर में भी सुना होगा कि हम तो ये करते थे, हमारे ज़माने में हम ये करते थे, हाँ ऐसे करते थे, है ना। अपने मार्शमेलो स्टडी, मार्शमेलो इज अ टॉफी काइंड ऑफ थिंग, it's a yeah, something that children love. It was done at Stanford University on 4-year-old kids. And basically, this study was to tap on the cognitive and non-cognitive abilities, suggesting that emotional and social skills actually help to improve your cognitive functioning. Suggesting that your social and emotional skills actually improve your cognitive functioning. Now children, 4-year-old, they were made to stay alone in the room, and there were marshmallow in that room, and they had to wait for a researcher to return. And they were told to wait till the researcher comes and not to eat the marshmallow if they could resist the impulse to hold on. And in case they could hold on, they would get 2 marshmallows. इम्पल्स अगर रोक पाओगे तो फिर 2 मिलेंगे, ठीक है। Now these children, when they were traced 10 years later, जिनको वहाँ पे स्टडी किया गया, and when they were tracked down 10 years later, they found that kids who were able to resist the temptation, they had a total SAT score, जो special ability score होता है, that was 210 points higher than those who did not. इम्पल्सिविटी अगर आप होल्ड कर पाते हैं और उसको आप सस्टेन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, दैट वुड बी ट्रांसलेटेड इनटू अ हायर कॉग्निटिव एबिलिटी लेटर ऑन इन लाइफ। सो दिस इज वेयर पहली स्टडी ने बोला कि EQ एंड IQ सेपरेट है, ये स्टडी कह रही है कि EQ फ्यूल करता है बेटर IQ। अगर
आपका इनहेरेंटली आपका EQ स्ट्रॉन्ग है तो आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज उससे बेटर हो जाएगी. चलिए, now coming on to the models, let's do the first model, that is by Mayer and Salovey. Now Salovey and Mayer, sorry, not Mayer and Salovey. Salovey and Mayer in 1990 had proposed 4 branches to emotional intelligence in their model. The first is perception of emotions. Perception of emotions. So the first step is understanding emotions. The first step in understanding emotions is to actually or accurately perceive them. So it may involve understanding non-verbal signals also, like body language and facial expressions. The second is reasoning with emotions. This involves thinking and cognitive activity. To actually use emotions in order to aid reasoning. Emotions, they help to prioritize what we pay attention to and thereafter react to. We may respond emotionally to things that garner our attention. Okay? The third thing is understanding emotions. The third branch is understanding emotions. The emotions that we perceive can carry a wide variety of meanings. And understanding emotions, wide variety of meanings, and understanding emotions deals with interpreting the cause and meaning of that emotion. Like for example, if someone is angry, so you know that the person is angry, that you perceive, emotion आपने label कर दिया. But then what has made that person angry? Is it something about you that made that person angry? Is it something that she is displacing upon? कहीं और से डांट पड़ी आपने निकाल रहे हैं? Yeah, at times you find I've seen people also जिनका emotions में थोड़ा हाथ तंग होता है. Especially I've seen men, like this. जो जिनके पास एक या दो इमोशंस ही हैं, उनको जब फ्रस्ट्रेशन होता है तब भी गुस्सा आता है, हेल्पलेसनेस होती है तब भी गुस्सा आता है ना, हर चीज में गुस्सा कर देते हैं. फादर्स यू मस्ट हैव सीन, एक इमोशन आता है उनको, नहीं, मदर्स हैव अ वैरायटी, आई हैव नोटिस्ड दिस. सो लाइक व्हेन माय चाइल्ड she times discusses with her friends and उसके पापा भी ऐसे करते हैं, उसके पापा भी ऐसे करते हैं. So this is I think kind of maybe socialization ऐसी है, और कहीं ना कहीं शायद हमारे कल्चरेशन में
एक बहुत स्ट्रिंजेंट एटीट्यूड है मेन के इमोशंस के प्रति। उनको वैरायटी ऑफर भी तो नहीं करती सोसाइटी, करती है? हमारे पास तो बहुत वैरायटी, मुंह ला लो, which includes regulating emotions and responding appropriately to your emotions, to emotions of others. Regulating emotions, responding appropriately to your emotions and to the emotions of others. So all these are important aspects of emotional management. मैं उस दिन तुम्हें क्या बोलती, जिस दिन मैं बहुत ब्राइट हूँ उस दिन मेरे से बच के रहो। वो शायद इमोशनल मैनेजमेंट करते हैं हम। जिस दिन मूड खराब हो एंड इट वर्क्स, उस दिन अच्छे से रेडी हो जाओ, थोड़ा दो चार लोग कह देते हैं अच्छे लोग, तुम्हारा मूड चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर उस दिन आप ऐसा गंदा मंदे से बन के आओ, लोग भी तुम्हें ऐसे देखते हैं, है ना, तो वैसा सही मूड पूरा दिन चलेगा। So you need to regulate your emotions. You have to come out of that, low emotion. You need to manage your emotions, and that is important. So these are 4 things. Now Salman Mayer says that these 4, branches, they are arranged from more basic psychological processes to higher, more psychologically integrated processes. They are arranged from more basic psychological processes to higher, more psychologically integrated processes. Like for example, the lowest level branch, that is perceiving emotions. It concerns the relatively simpler ability of perception and expression. In contrast, the highest level branch, it consists of, or it concerns conscious, reflective regulation of emotion. Okay? So from simpler to more complicated है जो चारों branches. तो first 2 है, या in fact first is basic perception, but then उसको अच्छे से regulate करना, उसको process करना और उसको modulate करना, वो आपका 4th है. Now that's all about Mayer and Salovey. Let's do the Goldman's model. Goldman. Now Goldman in 1995 addressed that there is a non-intellectual kind of intelligence which is more important for a happy and productive life than IQ. There is a non-intellectual kind of intelligence which is more important for a happy and productive life than IQ, and this is what is called emotional intelligence. Definition मैंने आपको पहले दे दी इसकी, ठीक है? Now Goldman के जो model है, it has 5 major parts. First is knowing your own emotions. Second is managing one's emotions. Third is motivating oneself. Fourth is recognizing others' emotions. And fifth is handling relationships. हमारी क्लास है इसके बाद याद खत्म थोड़ा सा ही ज़्यादा हैंडलिंग रिलेशनशिप्स बस 8 मिनट रह गए तो 8 मिनट में थोड़ा सा okay now each of these Goldman says these 5 elements they play an important role in shaping the outcomes that we experience in life.
All 5 are important. Okay. The first now, let's do it in detail. That is knowing your own emotions. Now, Goldman says that emotions are powerful reactions, and we all must be aware of them, or aware of one's own emotions. But they are powerful reactions, and all of us must be aware of our emotions. But not all of us are as aware of it. Now they propose that if you cannot make out your emotions, if you're not aware of your emotions, if you cannot make out your emotions, then one, you cannot make intelligent choices. जब पता ही नहीं अच्छा क्या लगता है और बुरा क्या लगता है तो फिर choice कैसे करते हो? ठीक है? You cannot make intelligent choices. And second, such people are poor in expressiveness. Such people are also poor in expressiveness. That is, they cannot show their emotions or feelings clearly through facial expressions, body language, or other cues. And third, this in turn affects their interpersonal relationships, because others cannot make out what they want. Therefore, it is very important to know your own emotions. ठीक है जी? अगर आपको अपने इमोशंस नहीं पता है तो आपको पहली बात तो यही नहीं पता चलेगा कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं. You cannot make choices which would actually gratify your emotions. And second thing is that since you don't know your emotions, so you're not aware of your emotions, then you will fall short of expressing them. और जब एक्सप्रेस नहीं करोगे तो फिर कैसे एक्सपेक्टेड है कि दूसरा बंदा उनको परसीव करेगा और फिर आपको खुश कर सकता है. तो कहीं ना कहीं आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए. जब मैं बीए का प्रैक्टिकल कराती हूँ ना और बच्चे बीटीआई पे मीटर तोड़ के स्कोर और मेनी फ्रेंड्स and may prove to be more successful. According to Hatch, this is what is called interpersonal intelligence. Which includes the ability to coordinate efforts of many people. Sorry? Yes, Gardner also. To coordinate efforts of many people, to negotiate solutions, ability to negotiate solutions to complex interpersonal problems, being good at giving others feedback that they don't mind. ये बहुत जरूरी है. To give others feedback that they don't mind, and being a team player. तुम्हारे पता नहीं स्कूल में अवार्ड्स मिलते थे? एक तो एकेडमिक अवार्ड्स तो मिलते हैं. हाँ, स्कॉलर तो एकेडमिक का हो गया ना, उसके अलावा भी मिलते थे कोई? स्पोर्ट्स में मिलते हैं. स्पोर्ट्स वो भी अचीवमेंट ओरिएंटेड है. और भी कुछ? अटेंडेंस हाउस कैप्टन जनरली उनको मिलेगा जो लीडरशिप स्किल्स, उनमें ये हाई होगा सब कुछ. ठीक है, नीचे आपके हाउस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसको कैसे सॉल्व करना है, अकाउंटेबिलिटी, दूसरों को सबको साथ लेके वीकर और सबको इकट्ठा. जब टीम होती है तो उसमें कई शामिल होते हैं, कई इनकेपेबल होते हैं, मतलब लेसर के आई वुड नॉट से इनकेपेबल, लेसर केपेबल होते हैं. कई होते हैं जो चालू होते हैं, तुम कर लो वहाँ फोटोवेक चालू की. हर तरह का बंदा है टीम में, लेकिन वो सबको साथ लेकर टीम को, जो आपको शायद स्कूल में टास्क मिलते थे फ्लोर वाइज मिलता होगा या हाउस वाइज मिलता होगा, नोटिस बोर्ड,
या बाहर का कॉरिडोर डेकोरेशन, ऐसे करके टास्क मिलते थे। बेसिकली वो चीज़ें आपके टीम में काम करने का तरीका या सिखाने की चीज़ें होती थी। फिर उसमें से आपका एक हाउस कैप्टन चुना जाता था। मेरी बेटी के स्कूल में मैंने देखा अवार्ड्स, इन सब के अलावा अवार्ड्स थे, मिस्टर और मिस एमिकेबल, यू नो, ऐसे। तो आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स के भी अवार्ड्स थे। तो वो टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके चुनते थे। एक तो टीचर की परसेप्शन अलग होगा, बट देन स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी ऑब्जर्व करते थे कि कौन ज़्यादा सियानों के सारे कॉन्फ्लिक्ट सुलझा रहा है। जरूरी नहीं है वो हाउस कैप्टन हो या कोई रोल में, ठीक है। सो दीज थिंग्स, पीपल हु आर दिस, दे विल बी people whom others would flock towards them. People like to be with them. I had a hostel roommate come classmate in my masters.